Hello everyone, this is Vinayak Pandey and today I am going to help you master problem solving skills. All the inspiration from the book How to Stop Worrying and Start Living by Dale Carnegie. मैंने भी ये बुक पढ़ी है और ये बुक पर्सनली मुझे बहुत पसंद आई बिकॉज ये बुक हमें बताती है कि हमें स्ट्रेस से कैसे बचना है और कैसे अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है. The ideas and the examples and the methods this book proposes are just awesome. तो आज मैं आपको भी बताऊंगा जो मैंने सीखा इस किताब से. डेल कार्नेज हमें स्ट्रेस से बचने के लिए 3 मेथड्स बताती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू रिसाइट सम ऑफ द लाइंस जो कि लिखी है एक रोमन पोएट हॉरेस ने. और ये पता है कब लिखी गई थी? जीसस क्राइस्ट के बर्थ से 30 years पहले. क्या लिखा था? हैप्पी द मैन एंड हैप्पी ही अलोन, ही हु कैन कॉल टुडे हिज ओन, ही हु सिक्योर विद इन कैन से टुमारो डू द वर्स्ट फॉर आई हैव लिव्ड टुडे. यानी कि अगर आपके पास 24 घंटे आज के, अगर आप जिंदा आज हैं, अगर आप सांसें आज ले रहे हैं, अगर आप मोमेंट्स आज एंजॉय कर रहे हैं, अगर आप भगवान से प्रार्थना आज के लिए कर रहे हैं, तो आपका दिमाग टुमारो और यस्टरडे में क्यों फंसा हुआ है? आपका दिमाग भी प्रेजेंट सिचुएशंस में ही होना चाहिए. आपको टुडे को अपना बनाना है, टुमारो तो खुद ब खुद अपना हो जाएगा. अक्सर लोगों को यही स्ट्रेस होता है कि हमारे साथ कल क्या होगा, हमारे साथ कल क्या होगा, क्या हुआ था. तो यस्टरडे टुमारो से बाहर निकलने का ट्राई किया जाए. तो मान लीजिए अगर आप किसी भी अपने वर्क में फेल हो गए हैं, आपको सक्सेस नहीं मिली है जो आप डिजर्व करते थे, तो 3 स्टेप्स हमें बताए हैं यहाँ डेल कार्नेज ने. पहला, थिंक. व्हाट डू वी हैव टू थिंक? थिंक व्हाट इज द वर्स्ट पॉसिबल सिचुएशन दैट कैन कम. जो सबसे बुरी सिचुएशन हो सकती है इस फेलियर के बाद, वो आपको सोचनी है. जब आप ये सोच लोगे कि क्या वर्स्ट सबसे ज्यादा हो सकता है, तो उसे एक्सेप्ट कर लो. प्रिपेयर योर सेल्फ मेंटली टू एक्सेप्ट द वर्स्ट दैट कैन हैपन. उससे क्या होगा? जब आप एक्सेप्ट कर लोगे, चलो हो जाएगा, होने दो. जब आप एक्सेप्ट कर लोगे जो वर्स्ट हो रहा है वो हो जाए, तो आपका स्ट्रेस यहीं खत्म हो जाएगा. आपका जो अंदर से, आपको जो नींद नहीं आएगी, आपका जो डिप्रेशन है, एंजाइटी, वो सब यहीं रुक जाएगा, यहीं बंद हो जाएगा. फिर देन यू कैन ऑटोमेटिकली कामली सॉल्व द प्रॉब्लम्स. अब हमें क्या पता किस टाइप की प्रॉब्लम्स हैं, तो अब मैं आपको सिखाऊंगा प्रॉब्लम को सॉल्व करना. हाउ टू मास्टर प्रॉब्लम सॉल्विंग. फर्स्ट ऑफ ऑल, टेक पेपर एंड पेन. हमेशा जब भी आपको बहुत सारी प्रॉब्लम फील हो कि अरे यार मेरे पास बहुत प्रॉब्लम्स हैं, मेरे पास बहुत प्रॉब्लम्स हैं, तो एक काम करिए, एक पेपर और पेन लेकर बैठिए. अपने लिए 4 क्वेश्चंस लिखिए और अपने आप से पूछिए व्हाट इज द प्रॉब्लम. फर्स्ट क्वेश्चन. क्योंकि यहां मैं आपको इंट्रोड्यूस करूंगा चार्ल्स लॉ से. चार्ल्स लॉ कहता है अ प्रॉब्लम वेल स्टेटेड इज अ प्रॉब्लम हाफ सॉल्व्ड. अगर किसी प्रॉब्लम को आपने करेक्टली पेपर पर लिख लिया, तो वो प्रॉब्लम को आपने 50% सॉल्व कर दिया. क्योंकि आधे लोगों को पता ही नहीं होता कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या है. तो सबसे पहले आप लिखिए व्हाट इज द प्रॉब्लम. सेकेंड, आप लिखिए व्हाट इज द कॉज ऑफ द प्रॉब्लम. प्रॉब्लम का रूट क्या है, प्रॉब्लम आपको किस चीज से है. फिर थर्ड लिखिए व्हाट आर ऑल द पॉसिबल सॉल्यूशंस. जितने भी सॉल्यूशंस आप निकाल सकते हैं, उन्हें आप लिखिए एक पेपर पे. और उसके बाद व्हाट इज द बेस्ट सॉल्यूशन, या सॉल्यूशन जो आप रिकमेंड करते हैं, जो आपको सबसे कन्वीनियंट लगता है, उस सॉल्यूशन को लिखिए और वो आपका आंसर है. इस तरीके से आपने प्रॉब्लम सॉल्विंग, क्योंकि आप पूरी दुनिया से झूठ बोल सकते हैं, पर आपको पता है कि आप कैसे हैं. ऑनेस्टली और इम्पार्शियली इन क्वेश्चंस को करिए और देखिए कितने बेहतरीन तरीके से आपको यहाँ आपका रिप्लाई मिलेगा. Now I'll be reciting you a story from Carnegie book only, the story of Willis H. Carrier. In this story, you learn that the ways that I told you to relieve stress, how Willis H. Carrier did it and got successful. Willis H. Carrier, the brilliant engineer who launched the air conditioning industry and who headed the world famous Carrier Corporation, Syracuse, New York. It is one of the best techniques I ever heard of for solving worry problems, and I got it from Mr. Carrier personally when we were having lunch together one day at Engineers Club in the New York. When I was a young man, Mr. Carrier said, I worked for the Buffalo Forge Company in Buffalo, New York.
I was handed the assignment of installing a gas cleaning device in the plant of Pittsburgh Plate Glass Company at Crystal City, Missouri, a plant costing millions of dollars. The purpose of this installation was to remove the impurities from the gas so it could be burned without injuring the engines. This method of cleaning gas was new. It had been tried only once before and under different conditions. In my work at Crystal City, Missouri, unforeseen difficulties arose. It worked after a fashion, but not well enough to meet the guarantee we had made. I was stunned by my failure. It was almost as if someone had struck me a blow on the head. My stomach, my insides began to twist and turn. For a while, I was so worried I couldn't sleep. Finally, common sense reminded me that worry wasn't getting me anywhere. So I figured out a way to handle my problem without worrying. It worked superbly. I have been using the same anti worry technique for more than 30 years. It is simple, anyone can use it. It consists of three steps. Step 1, I analyzed the situation fearlessly and honestly and figured out what was the worst that could possibly happen as a result of this failure. No one was going to jail me or shoot me, that was certain. True, there was also a chance that I would lose my position, and there was also a chance that my employers would have to remove the machinery and lose the $20,000 we had invested. Step 2. After figuring out what was the worst that could possibly happen, I reconciled myself to accepting it if necessary. I said to myself, this failure will be a blow to the record, and it might possibly mean the loss of my job. But if it does, I can always get another position. Conditions could be much worse, and as far as my employers are concerned, well, they realize that we are experimenting with a new method of cleaning gas. And if this experience costs them $20,000, they can stand it. They can charge it up to research, for it is an experiment. After discovering the worst that could possibly happen and reconciling myself to accepting it, if necessary, an extremely important thing happened. I immediately relaxed and felt a sense of peace that I hadn't experienced in days. Step 3. From that time on, I calmly devoted my time and energy to trying to improve upon the worst which I had already accepted mentally. I now tried to figure out ways and means by which I might reduce the loss of $20,000 that we faced. I made several tests and finally figured out that if we spent another 5,000 for additional equipment, our problem would be solved. We did this, and instead of the firm losing 20,000, we made 15,000. I probably would never have been able to do this if I had kept on worrying, because one of the worst features about worrying is that it destroys our ability to concentrate. When we worry, our minds jump here and there and everywhere, and we lose all power of decision. However, when we force ourselves to face the worst and accept it mentally, we then eliminate all these vague imaginings and put ourselves in a position in which we are able to concentrate on our problem. This is the incident that I have related occurred many years ago. It worked so superbly that I have been using it ever since, and as a result, my life has been almost completely free from worry. So, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इन स्टेप्स को फॉलो कर कर आपकी लाइफ बहुत हद तक सुधर जाएगी। विलिस एच कैरियर की भी लाइफ बहुत हद तक सुधर गई इन्होंने ये 3 स्टेप्स को फॉलो किया तो। So thank you very much everyone. I hope you enjoyed the video. I hope you learned. And if you like the video, if you like the content, please subscribe for such videos. Thank you.